Good evening and welcome. Welcome to Divine Healing Valley Spirituality and Healing Meet. And we are here on a Wednesday meet, our weekly program. And today the topic is योग वशिष्ठ साधक का जीवन. तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमने अभी तक कवर किया क्या है. What all we have covered so far. So we had an introductory session on योग वशिष्ठ wisdom, where we saw how the Brahma Rishi Vasishtha is teaching the Prince Ram, who is 14 years old probably, and that is when he is being given this Brahma Gyan, or the highest Gyan Yoga, because the sage knows, the Maharshi knows that he is the one, he is the chosen one to establish Dharma on planet Earth. So that is how the whole concept is, right? So he is making him ready for his battles ahead. So he is giving him the Brahma Gyan. So that is where we started, right? So the topic was, the question was, how do I become free from the suffering and miseries of life? Either I participate in it, then how do I remain unaffected, or do I give it up and become a sannyasi and leave everything and go? So the answer is, obviously, you have to live in the world and then face your problems. Whatever is the life situation, you will face it. And to maintain that calmness and the stability, you will be given the highest level of wisdom. And the topic started by knowing that everything starts from all the sufferings and miseries. Everything starts from ignorance. And if ignorance is the problem, the solution is the highest wisdom. So that is how Gyan Yoga is supposed to be the source of all the redemption, liberation, moksha. So that is Gyan Yoga is the highest wisdom, we say that, right? And that is how the topic started. And then it is laid out Purusharth, the importance of Purusharth. And we saw Purusharth is basically everything that you do to do any kind of karma. So whether it is thoughts, it is words or deeds, the cause of it and the impact of it. That means your intention and the emotion behind that action. Everything combined is called Purusharth. And when you do Purusharth, you create your niyati, which is your destiny. And of course, when you do your Purusharth, what all do you need? You need the blessings of the Guru to guide you. And you also need the Guru Kripa or the Prabhu Kripa, which is basically the Tathastu, which will give you the desired results in life. So only your actions are not sufficient. Your actions should be on the path of Dharma, which is guided by a Guru. And you should have the Prabhu Kripa, which will give you the Tathastu, which will manifest results in your life. So that is the ideal understanding of Purusharth, giving you the niyati or the destiny. Okay, so this is a quick recap I am doing. So we saw about Purusharth and we also saw the pillars of Purusharth, right? So in Raghukul, it is taught to Lord Prince Ram that there are four pillars of Raghukul. तो क्या है वो? स्वधर्म, राजधर्म, वचन पालन, that is the third, and the fourth is samarpan ya tyag. So these are the four which were taught to Lord Ram as the four pillars of Purusharth, which will always guide all his actions in his life. And if you see the whole of Ramayana, all his actions were guided by these four pillars, one of these four pillars. And all the three pillars, basically Swadharma, Rajdharma, and Vachan Palan, is based on Tyag and sacrifice or Samarpan, whatever you can consider, right? And we also saw what are the Purusharth which is required for a Saadhak, for us, right? So you could have some, so what is the pillars of Purusharth basically means? Deveshika message, please repeat, okay? So I will take the questions later. Right now, just go with the flow. It is already been discussed in the earlier sessions, okay? So the four pillars of Purusharth, I will repeat that. What was taught to Lord Ram was Swadharma, which is the purpose of this lifetime. Then Rajdharma, as a prince, as a king, you have a duty towards your
प्रजा, राजधर्म, वचन पालन जो कि बहुत फेमस है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, राइट। सो वचन पालन उनका मेजर एक स्तंभ था। एंड ऑफ कोर्स सैक्रिफाइस, त्याग, समर्पण, which is ingrained into all the three. So it is never about selfishness, it is all about selflessness. So that is what the pillar of Raghukul. But for us, it will be different. Each individual will have their own values, own guiding principles, which we shared when we talked about the pillars of Purusharth, right? So for me, I shared, it is Satya, Santosh, Sadhana, Satsang, Seva. So these are the 5 pillars which I have chosen for myself. All my actions and all my decisions are guided by these. So similarly, all of you have your own guiding principles and values which will guide all your actions. All your actions will be guided by at least one of these. So have as many as possible. I have 5. And I am thinking of adding one more, which is Shanti, because I chose all the S. No? So now I have 6. I have added one very recently. So peace, Shanti. So the 6S, that is my pillars of Purusharth, right? So everybody will have their own pillars of Purusharth, which you will be following unknowingly. Better make it into your conscious mind. आपके conscious knowledge होनी चाहिए कि ये मेरे pillars हैं और इसके basis पे मैं अपने सारे पुरुषार्थ कर रहा हूँ, so that you are very clear what destiny you are creating, right? So that is another aspect of sadhana or a sadhak. And then we saw samarpan. In the last session, we talked about samarpan. And how do we understand samarpan? We saw first it has to start with arpan. All the materialistic belongings you can offer to divine. And when we talk of samarpan, we are talking of God. Samarpan to the surrender to the divine. And we discussed that in the last session, right? So सब कुछ अर्पण कर रहे हो divine को. So all the materialistic possessions, maybe your wealth, your clothes, your food, whatever you can give, you are giving to others, you are actually giving to the divine. So arpan kiya, right? And then you have tarpan. Tarpan is what? It is ablution. So you are washing away all your vikars in your chit. तो अपने जो बोलते हैं अंतःकरण को शुद्ध करना है, चित्त को शुद्ध करना है, चित्त शुद्धि. That is done by tarpan. Tarpan is washing away. So you access the divine light and then you dissolve all your vikars and then you send it back to the source, to the divine as love and light. That is how you free yourself. So arpan, tarpan, and then samarpan. This is how we saw in the last session, right? I hope I am making sense. Yes, this is all a recap, by the way. And today we are going to learn the life of a sadhak. जो साधक है उसकी लाइफ कैसी होनी चाहिए. So I will first take some. Is my network okay? Is my voice audible? Or am I frozen? Yes. Yes, Yes, sir. Yes, yes, sir. Yes, sir. absolutely right. Yeah, because I can't see anybody. I can't see anybody. Hello? Yes. Okay, good. So now what we are going to look at is the life of a sadhak. So we are going to look at what is important for us as a sadhak in our life. But first we will see what is taught in the Yoga Vasishtha wisdom, right? So what is taught here is the life of a sadhak should be obviously, now I won't say should be because should it doesn't work, but this has a gyan, so I'm using the word should, right? Ideally. So the ideal life of a sadhak would be, first, the life purpose should be very clear. Life purpose should be very clear, correct? So अगर साधक है तो स्पिरिचुअल जर्नी पे है. स्पिरिचुअल जर्नी पे है तो based on his situation in life, whatever life situations he is facing, he will move forward in the spiritual journey from that level, right? But ultimately, the goal should be very clear, that self-realization or operating at the highest potential, self-actualization you bolte. So self-actualization is what is the goal of a sadhak, that I should be operating at the highest level, highest potential.
which I am capable of. That should be the self-actualization state, right? Now, when that purpose is very clear, like self-realization or self-actualization, if that is the purpose and the sadhak is very clear, now he will use his purusharth. And पुरुषार्थ को हमने देखा हुआ है शास्त्रों में, जैसे बताया गया है, पुरुषार्थ में काम, अर्थ, धर्म, मोक्ष, ये 4 हैं पुरुषार्थ, है ना? इसके पिलर्स हैं जो हमने डिस्कस किया, जो वैल्यूज हैं, जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं, जो हमारे एक्शंस को गाइड करेंगे. But then basically Purusharth is divided into 4 parts, which is basically Kama, which is desires, Artha, wealth accumulation, Dharma, purpose of life, or why you are doing what you are doing. Correct? All your actions should be, why are you doing that? It should be explained in Dharma. So the purpose, the duty, the Kartavya. And of course, Moksha, the liberation. And these 4, you can say, parts of Purusharth also combine with the 4 life situations that you are in. आप ब्रह्मचर्य में हो, गृहस्थ आश्रम में हो, वानप्रस्थ में हो, या संन्यास में हो, right? So you can divide your life into maybe 100 years or 25 years each, approximately, or 80 years or 20 years each. And then the first 20 years is brahmacharya. You need to study, student life, celibacy. Then grahastha ashram, where you enjoy all the comforts of Kama and Artha, accumulation of wealth. You have learned the skills, so you will earn your livelihood, and you enjoy family life. And then slowly you move away to the retirement, which is Vanaprastha, where you are only focusing on Dharma and preparing yourself for Moksha, the liberation, which comes in the last stage of Sannyas. So these 2 are absolutely in sync, the 4 ashrams and the 4 Purusharths. Yes? So based on this, the sadhak will decide where he is and what should be his duty right now. Purusharth kaise karega wo. So this is the beginning of our discussion. So I've given you some thoughts to think. So let us have some sharing. What is opening up? What are you understanding from what I have said so far? And then we will take this on further. ये जनरल है, ये योग वशिष्ठ में जो विजडम में जनरल बताया गया है, मैंने अभी वो डिस्कस किया, स्पेसिफिक पे नहीं आया. Okay, so you can just share your understanding where you are and what you are understanding from this discussion. So who would like to share? क्या खुल के आ रहा है? What is opening up? Anybody can do that? Anybody can say? Sir, namaste. Yes, namaskar. The thing that is opening up is कि first of all तो design of your life, जैसे आपका 5 आपने किया है, अपने मतलब समर्पण भी है, सत्य भी है, सेवा भी है, सारा ना, तो one should find their own like pillars जो भी है अपने के, क्या how you want to go ahead in your life. फिर पुरुषार्थ का जो आपने बोला, तो where at which stage you are, and accordingly your karma should be in sync with. अभी जैसे वानप्रस्थाश्रम अगर है, लेकिन रिटायरमेंट का है, तो हाउ वो ऐसा मेरा थोड़ा समझ में मुझे ऐसा आता है सर. परफेक्ट, इट इज एब्सोल्युटली राइट. सो यू नीड टू फर्स्ट मालूम तो होना चाहिए ना अभी मैं कहाँ हूँ, तभी तो आपको पता लगेगा मेरे को आगे कर जाना कहाँ है. इफ यू डोंट नो वेयर यू आर, हाउ विल यू नो वेयर टू गो? राइट. इफ यू नो आई एम इन चेन्नई, देन यू नो इफ आई हैव टू गो टू दिल्ली, देन यू नो द रोड मैप, राइट? तुमको पता ही नहीं है तुम कहाँ पे हो, इंडिया में हो या यूएस में हो, देन यू कांट डिसाइड दैट आई हैव टू गो टू द हिमालयस. यू कांट, बिकॉज यू डोंट नो वेयर यू आर. फर्स्ट ऑफ ऑल योर बेयरिंग्स हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर. Yes, very good understanding, Nivedita ji. Let's acknowledge. So that is the starting point. मैं हूँ कहाँ पे? Road map. हम Google Map में भी तो डालते हैं ना. पहले तो your current space, current place. Then you put the destination. You simply can't put the destination and ask the guide to tell me where are you. That is where the Guru comes in actually. The Guru looks at you and he knows where are you. So then he says, do this. This will take you to where you want to be. So Saadhak is lost, so he needs that Guru guidance. That is why Guru is called the GPS, Guru positioning system. Sadhguru says that Guru is called the GPS.
Okay, good. So that is about your understanding, correct? So let us have more sharings. क्या खुल के आ रहा है? Where are you? And also, if you understand that technically एक needs hierarchy है, Maslow's need hierarchy, where it says that initially the person is looking for survival. अगर वो survival है, वो भूखा है, उसको बोलो तुम भगवान का नाम लो, तो वो यही कहेगा ना, भूखे पेट ना होए भजन गोपाल, राइट? उसको रोटी चाहिए, उसको सेल्फ रियलाइजेशन नहीं चाहिए अभी, तो पहले वो अपनी सर्वाइवल नीड्स पूरी करे। सर्वाइवल नीड्स पूरी होगी तो फिर सिक्योरिटी की नीड्स आएंगी, सिक्योरिटी की नीड्स हो जाएगी तो नाउ ही वांट्स लव एंड बिलोंगिंगनेस, देन ही वांट्स एस्टीम, सेल्फ एस्टीम एंड प्रेस्टीज। उसके बाद कहीं जाके वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात करेगा। तो यू कैन अंडरस्टैंड योर लाइफ सिचुएशन फ्रॉम देयर ऑल्सो। इफ ऑल द सर्वाइवल नीड्स आर मेट, दैट नीड इज फुलफिल्ड। इफ द कंटिन्यूटी, दैट मीन्स यू आर गॉट सम रिजर्व्स, आपके पास सफिशिएंट बैलेंस है, then you know security is also not a problem. If you have a good family life, good friends, good relatives, अच्छी लाइफ जी रहे हो, तो love and belongingness भी हैंडल हो गया। And if you have some respectable position in society, किसी ग्रुप के प्रेसिडेंट हो, फैमिली के मुखिया हो, तो आपका वो सेल्फ एस्टीम वाला भी पार्ट क्लियर हो गया। नाउ यू कैन थिंक ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अब आप बात कर सकते हो आगे चल के कि क्या करना। अभी ये 20s में भी हो सकता है, 30s में भी हो सकता है। एज इज नॉट द क्राइटेरिया, योर सिचुएशन वेयर यू आर इज इंपॉर्टेंट। somebody is already financially independent at the age of 30, so he can then think of charity, and he can think of donations, and he can think of karma yoga. So you have to understand, you can pick up any of the yoga mark. Only thing is you should first be clear where you are, right? And then you can pick up any path. तो साधक को अगर ये मालूम हो मैं कहाँ हूँ, फिर वो अपनी मनचाहा चॉइस ले सकता है। अब कोई अगर किसी के पास में वेल्थ है and he wants to donate the wealth, now what is he, where is what path he is taking? The guru immediately knows he is a कर्म योगी, उसको दान दक्षिणा करनी है, उसको चैरिटी करनी है, he wants to help the people seeing the divine in them, so he is a कर्म योगी then, correct? So he will be moving on the path of कर्म योगी, where he will be serving people, सेवा करनी है उसने। अगर कोई भक्ति योग में है तो वो अपने आराध्य की भक्ति करेगा। भक्ति करने के बहुत सारे तरीके हैं। द सिंपलेस्ट फॉर्म इज व्हाट, जो गृहस्थ जीवन में हम करते हैं। सुबह उठे, पूजा पाठ शुरू, तो पूजा अर्चना वंदना स्मरण समरण सिमरण जो मर्जी आप करो, आप मंत्र जाप कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, भक्ति गान गा रहे हो, ये सब भक्ति योग हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म में, करेक्ट? तो आप फिर भक्ति योग करो, दैट इज योर कॉलिंग। भक्ति योग मीन्स कंप्लीट डिवोशन, राइट? और कोई है नहीं, मेरे को तो अपना एनालिटिकल माइंड में डिविनिटी को एक्सप्लोर करना है, एनर्जी, गॉड इज एनर्जी, तो ही इज टॉकिंग ऑफ ज्ञान योग। somebody sees that as a divine light, ये राजयोग, धारणा ध्यान समाधि करो। तो डिपेंडिंग ऑन द पाथ द गुरु विल गाइड यू, एंड गुरु नीड नॉट बी ए फिजिकल फॉर्म, गुरु कैन बी योर ओन कॉन्शियस। इफ द कॉन्शियस इज गाइडिंग यू, फॉलो दैट। क्लियर है? तो इट कुड बी ज्ञान योग, भक्ति योग, राजयोग, कर्म योग, whatever you feel like, whatever is your calling. And if you're really a smart sadhak, you will do all of them. No? With time you can follow all of them. Whenever you, whatever is your calling, आप सबको करते हुए आगे बढ़ोगे, क्योंकि आपको ये नहीं मालूम है कौन सा योग आपको आगे बढ़ाएगा स्पिरिचुअल जर्नी में। सो यू डू ऑल द फोर, एंड आई डिड दैट, and it is very very fruitful, by the way, right? So it will simply take you whichever wherever there is any blockage, you will move the around that. आपको सर फोड़ना नहीं पड़ेगा, साइड से निकल लो, आगे बढ़ जाओ। तो वन ऑफ दीज पाथ विल मूव यू फॉरवर्ड। क्लियर है? तो साधक का अपना पहले तो कहाँ है वो मालूम होना चाहिए, और फिर रास्ता कौन सा लेना है, विद सम गाइडेंस ही विल बी एबल टू फाइंड आउट दैट पैशन कहाँ है, उस पर आगे बढ़ोगे। अब साधक की क्वालिटी क्या है, साधक को कौन सी मेन इंपॉर्टेंट चीजें चाहिए? साधक है तो साधना तो करेगा ही ना, तो इसी योग मार्ग पे साधना करेगा। कुछ क्वालिटीज हैं, तो 4 इंपॉर्टेंट क्वालिटीज बताई हुई हैं इसमें। तो वो है श्रद्धा। श्रद्धा यू कैन अंडरस्टैंड एज व्हाट? टेल मी अ ट्रांसलेशन इन इंग्लिश। श्रद्धा क्या हुआ? Devotion.
भक्ति, डिवोशन सर। भक्ति, डिवोशन, faith. perfect. Faith, श्रद्धा मीन्स फेथ, करेक्ट। तो श्रद्धा, फेथ हो गया। उसके बाद आया आपका भक्ति, डिवोशन, प्रेम, love, unconditional love for the, we are talking about divine only, huh? Don't confuse this with human beings. Human beings are not, I won't say fit, but then they are not the right people to get these kind of qualities. उनके ऊपर न्यौछावर नहीं करना है, ये सब डिवाइन के लिए है। तो श्रद्धा, भक्ति, प्रेम एंड देन समर्पण। तो ये 4 क्वालिटीज हैं साधक के। You will use this whenever as and when you find the आराध्य, आपके अंदर की ये डिवोशन या प्रेम या जो भी है, सरेंडर, इट विल कम आउट। जैसे जैसे आप कृष्णा की भक्ति में जाएंगे तो भक्ति योग में अगर होगा तो भक्ति और डिवोशन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यू वोंट हैव टू क्वेश्चन। साधक को कभी डाउट नहीं होता है। अगर डाउट है तो आप साधक नहीं हो। यू हैव दैट अनफ्लिंचिंग फेथ इन द डिवाइन। दैट इज द क्वालिटी ऑफ ए साधक। You need to understand that, right? I had recently seen a post also. Maybe I posted that in DHV. So a really spiritually grounded person होगा, he will have no doubts. He will be absolutely clear. कहाँ पे हूँ, क्या बात है, कहाँ जाना है. So you should be very, very clear on that. Yes? Okay, so these are the 4 qualities of a sadhak which will help you in the journey. Clear है? And of course, this is your path, you know. So as you move forward, क्या होगा? क्या होगा? आप साधना पे आगे बढ़ रहे हो, क्या होगा? गुरु की गाइडेंस है, प्रभु की कृपा मिल गई. Obviously there will be some results you will be getting. These are called realization. तो बाद में आएगा. Realization से पहले on the path you will get some siddhis, special qualities or special strengths you will get. And of course people I will tell you that. So some siddhis people get during the spiritual sadhana, which will actually, they feel so great that they get diverted. वो path से divert हो जाते हैं. So for example I can tell you, बहुत important सिद्धि जो मानते हैं वो है वाक सिद्धि, जो आइडियल है. This helps you in your sadhana, this helps you in your seva, because ultimately you have to use these siddhis to serve the humanity. That is why you got this. So you should not be misled by it. इसको ईगो नहीं बनाना है. मेरे को ये सिद्धि मिल गई, अब मैं ग्रेटेस्ट साधक बन गया. जैसे अब मैं शिव का सबसे बड़ा भक्त बन गया. रावण हैड दैट फीलिंग. अब मैं सबसे पावरफुल हूँ, क्यों? शिव का सबसे बड़ा भक्त मैं हूँ. और वो ईगो में भी आ गया और फिर सारे अधर्म कर रहे हैं. बता रहा हूँ. Hold on. And you need to have your back straight, if you're paying attention. So sit up with your back straight. Then you will be able to understand better. वरना सो जाओगे. Okay. Right. So on the path you will get some siddhis. You do not be distracted by it. First of all, focus on the path, because your path is spiritual journey and your goal is self-realization or self-actualization. No shortcut and no distractions. Right? अब अपने सीरियल्स में और स्टोरीज में बहुत कुछ सुना होगा. जैसे सिद्धियों में एक सिद्धि मानी जाती है कि अपने शरीर को बहुत बड़ा बना लिया, जैसे हनुमान जी बना लेते थे, या बहुत सूक्ष्म बना लिया. नाउ दीज आर गुड इन स्टोरीज. डोंट एक्सपेक्ट दिस सिद्धीज टू कम टू यू. आपकी फिजिकल बॉडी यही रहेगी, चेंज नहीं होने वाली है. अब आप बोलो कि मैं भी यहाँ से दिल्ली से छलांग मारूंगा छत पे चढ़ के और बॉम्बे में ताज होटल बॉम्बे में या फिर वहां जाके एलिफेंटा केव में सीधा उतरूंगा, तो नहीं होने वाला है. ये सब कहानियों में अच्छा लगता है, ये सब हनुमान जी के लिए ठीक है, हमारे लिए नहीं है. वैसे सिद्धि नहीं मिलने वाली है. इफ यू वांट टू जंप फ्रॉम दिल्ली टू बॉम्बे, टेक ए फ्लाइट. दैट इज अ बेटर थिंग. इसीलिए फ्लाइट बनी हुई है आजकल. सो वी डू दैट, वी ऑल्सो जंप, बट ओनली थिंग इज वी टेक ए फ्लाइट एंड देन जंप. तो ऐसी सिद्धीज का हमको ना कोई उपयोग है, ना कोई ज़रूरत है, ना आपको मिलने वाली है. मैं बहुत क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि कई साधक जो होते हैं सिद्धि मिल जाएगी सोच के साधना के लिए आते हैं, वो सुपरनेचुरल पावर्स मिल जाएंगी. अगर मिली भी तो इट इज़ फॉर द, नॉट फॉर योर ईगो ट्रिप,
it is for the benefit of the humanity, right? So what are the kind of siddhis that you can get? I said वाक सिद्धि. वाक सिद्धि क्या होती है? अगर आप सत्य और धर्म के मार्ग पे सत्यनिष्ठ हो, सत्यनिष्ठ का मतलब निष्ठा. निष्ठा क्या होती है? निष्ठा we can say commitment. You are really committed, right? तो अगर आप सत्य और धर्म के मार्ग पे सत्यनिष्ठ हो, जैसे राजा हरिश्चंद्र का एग्जाम्पल देते हैं, राइट? युधिष्ठिर का एग्जाम्पल नहीं दूंगा, राजा हरिश्चंद्र इज द आइडियल, राइट? तो जबकि वो भी धर्मराज थे, देन स्टिल. तो सत्यनिष्ठ मतलब if you are on the path of satya and dharma, you are always seeking and following the truth. That means you are thinking of truth, you are speaking of truth, your actions are on the based on truth. Then you will develop so much of power. ये एक सिद्धि है कि आप जो बोलोगे वो हो जाएगा. इसको वाक सिद्धि बोलते हैं, right? So there are many healers who simply by saying that you are healed, people get healed. They look at people, they get healed. We have many miracle healers, right? Sai Baba, or you can even consider Lord Jesus. Jesus Christ used to heal people just by saying it. So by looking at people, by touching people, you can heal people as a miracle, not as a regular process. जो healers का process है उसकी बात नहीं कर रहा, right? So this can be Vak Siddhi is something when you say something it happens. But this is a Siddhi. You get it when you keep doing what you say. झूठ बोलते रहोगे तो नहीं चलेगा, आपको सत्यनिष्ठ होना है. जो बोल दिया वही करना है, और जो कर दिया वही बोलना है. तो ये आपके करनी और कथनी में कोई फर्क नहीं रहेगा. Then you will develop this power that whatever you say will start happening in your life. This is Vak Siddhi. So Ranjana, did you get that? Vak Siddhi? Yeah. So this comes with practice. Don't say दो दिन से practice कर रही हूँ अभी तक नहीं आया. It can take lifetimes. But if you are good in your progress, maybe 20-25 years, you should be able to get to some level of Vak Siddhi. But it is always you can understand it's a continuous process. You will keep on doing it and you will keep on getting this Siddhi. So Vak Siddhi is very powerful, and I've experienced it. It is very powerful. Yes, that happens when you are talking only about the truth. You're talking only like a divine. तो आपका divine godly behavior होगा तो ये सिद्धियां आपको मिलेंगी. Another thing which is very common nowadays, of course, we call that telepathy, right? Most human beings have experienced this at some point of time, but some people, psychic healers, they are continuously using this telepathy to connect with people and transfer energy. Distance healing जो हम बोलते हैं, so distance healing is also a form of telepathy only, correct? So telepathy at a very high level. So you can think what the other person is thinking at some extreme level. You can see at some distance. दूरदर्शन बोलते हैं, हाँ. तो यहाँ बैठे बैठे फिजिकली नहीं देख रहे हो, लेकिन आंख बंद करके आप माइंड के आईज से कनेक्ट कर सकते हो एंड यू कैन सी व्हाट इज हैपनिंग देयर. तो क्लियर वॉइस बोल लो इसे, फ्यूचर देख सकते हो, आपको दूर की चीजें दिख रही हैं, दूर की बातें सुनाई दे रही हैं, जो कि हमने महाभारत में भी देखा था, हाँ? तो महर्षि वेद व्यास आए थे और उन्होंने स्पेशल संजय को पावर दी थी कि तुम रनिंग कमेंट्री सुनाओ, जैसे आजकल लाइव मैच देख के कमेंट्री देते हैं लोग. So he saw the whole battle of Kurukshetra live, and then he was translating that to, or giving that commentary to Dhritarashtra. Correct? We know that. So such a siddhi is possible. Yes, it is possible. Will you get it? No comments. No promise. You keep doing your spiritual sadhana. Whatever you get will be for the benefit of humanity, not for your doing. So if you are going to utilize that to serve humanity, you might get it. Like in my case, as a healer, I have reasonable level of telepathy and distance healing, which I do, and I can easily connect with people and get that aura feedback, which is I consider as a great siddhi, because that helped me a lot in serving humanity and serving healers. As a healer, I got that, and it's really benefiting, right? तो जो भी सिद्धि मिलेगी आपको, उसको लोगों की भलाई के लिए लगाओगे, then it will help you in your sadhana. But if you get dissuaded,
अगर आप डिस्ट्रैक्टेड हो गए, then that will end your spiritual journey. You will lose all the जो आपने पुण्य कमाया हुआ है बड़ी जल्दी, बिकॉज ये कोई मदारी का खेल नहीं है जो आप दिखा के पैसे कमाओ. But then you have to serve the humanity and take reasonable energy exchange, which is okay, which is as guided by the divine. That much is okay. Yes. So am I clear on the siddhis? Yes, Ranjana, you had a question. Go ahead. तो जैसे किसी को ना याद करो तो वो सामने आ जाता है, वो भी एक ऐसा ही है क्या? जब आप किसी के बारे में सोचते हो और वो भी आपके बारे में सोचता है, तो आप कनेक्टेड रहोगे. यू कैन फील दैट इमोशन, यू कैन नो एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग विद दैट पर्सन इमोशनली. तो यू कैन फील यू इफ दैट पर्सन वोंट, अगर वो सामने आपके कमरे के अंदर ही है, घर के अंदर ही है, तब वो आ सकता है सामने, वरना सामने कैसे आएगा? नहीं नहीं, आई मीन टू से कि जैसे हम किसी से बात कर रहे हैं और बातों में में मैंने किसी का नाम लिया कि मैंने ना उसको 1 साल पहले मिली थी और ये काम करा था, और थोड़ी देर बाद मैं देखती हूँ वो बंदा सामने होता है, मतलब रेगुलरली हो रहा है. और फिर ऐसा कई बार होता है सर. So it can be coincidence also. So don't judge too much into it. आप अपनी साधना करते रहिए, जो भी सिद्धि मिलेगी उससे फायदा क्या हो रहा है बताओ. हाउ आर यू हेल्पिंग अदर्स? आर यू हेल्पिंग अदर्स विद दैट पावर? मतलब ये तो मेरी सर्विस का है, मतलब प्रोफेशनली दिस इज हेल्पिंग मी Yeah. एंड द It is not for ऑर्गेनाइजेशन. helping you, by the way. It is for helping others. So if that is helping others, then you can consider, yes, that is some kind of a power that you have got. Otherwise, it is just a coincidence. So it is a divine, you can say divine guidance. Divine has made that provision that the person has come to you, maybe for a good interaction. So you do that, serve that person. जो भी आपकी लाइफ में आया उससे उसको सर्व तो करना ही है ना आपने. ठीक है, but don't confuse this with siddhis. An accidental coincidence is just an event in the time and space. वो यूनिवर्स का एक इवेंट हुआ है. You attracted that with your energy. That's all. You are attracting people and life situations in your life. So it was just a attraction or a creation. आपका creation था, आपने सोचा and then you created it. Simple. जिस चीज के बारे में सोचोगे वो मैनिफेस्ट होगा ना लाइफ में. तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है और कुछ नहीं, सिद्धि नहीं है. करेक्ट? बट यस, इफ यू डू दैट रेगुलरली एंड यू विल नॉट हैव एनी डाउट्स, बाय द वे. अगर आपको डाउट हो रहा है तो वो सिद्धि नहीं है. वो बहुत क्लियरली पता लग जाता है कि हाँ वो स्पेशल पावर है और ये मेरे को लोगों को सर्व करने के लिए मिला. क्लियर? Alright, good, very good. Let's acknowledge Ranjana, and there will be many other questions. So anybody who has any question can ask. Anybody else who has any question? तो एक साधक को मालूम होना चाहिए कहाँ है, कहाँ जाना है, कौन सी साधना करनी है, और उसमें मैंने पिटफॉल भी बता दिया कि आपको कोई भी सिद्धि मिल जाए, आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है. यूज करो उसे, आगे बढ़ो, आगे बढ़ते रहना. Yes. So anybody who has any doubts, any questions, any queries, you can ask me. Then we move on to the next part. No questions? Okay, we move on then. Now the question is, अभी हम साधक की बात कर रहे हैं. तो इन जनरल आमतौर पे लोगों की पॉपुलेशन जो प्लैनेट पे है, आमतौर पे सभी लोगों की क्या प्रॉब्लम है? अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो उस प्रॉब्लम को, और साधक की भी यही प्रॉब्लम होती है, राइट? इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. पहला प्रॉब्लम होता है मेरे पास कुछ है और मुझे वो नहीं चाहिए. सोच के देखिएगा, आपकी हर प्रॉब्लम इन्हीं 2 कैटेगरी में आएगी. मेरे पास कुछ है और वो मुझे नहीं चाहिए, और मेरे पास कुछ नहीं है और मुझे वो चाहिए. ये 2 ही प्रॉब्लम होती है. नाउ यू कैन थिंक ऑफ इट विच एवर वे यू वांट. आपके पास जॉब नहीं है और आपको जॉब चाहिए, करेक्ट? अब जॉब मिल गई तो अब आपके पास ऐसा बॉस है जो आपको वो नहीं चाहिए. गेट द पॉइंट? So all your problems, all the problems of humanity are basically into two conditions, two categories. Just see, all your problems will come into this. आपके पास कुछ है वो आपको नहीं चाहिए. Could be a neighbor, could be a disease,
could be a health condition, could be a wealth condition, could be a relationship. और दूसरा, आपको कुछ चाहिए और वो आपके पास नहीं है. You want something which you don't have, and you have something which you don't want. यही प्रॉब्लम है लाइफ की. तो एक साधक को क्या समझना है? सबसे पहले साधक को ये समझना है ताकि वो उस कैटेगरी से बाहर आ जाए. बताइए सोल्यूशन क्या है? समर्पण. समर्पण. अभी टेक्निकल नहीं बोलो, समर्पण. अभी टेक्निकल नहीं बोलो, अभी प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बताना है. ओके. कैसे बढ़ोगे आगे लाइफ में? Acceptance. हाँ, Acceptance. एक्सेप्टेंस ऑफ व्हाट? Current situation. ओके, टेल मी व्हाट इज द सॉल्यूशन. लिविंग इन प्रेजेंट. जैसे मैंने अभी बताया, आई हैव समथिंग, आई डोंट वांट इट, एंड आई डोंट हैव समथिंग व्हिच आई वांट. नाउ गिव मी अ सॉल्यूशन टू दिस. कौन सा कोटेशन दोगे या कौन सा एक पंच लाइन दोगे मेरे को व्हिच विल टू सॉल्व बी माय प्रॉब्लम? हैप्पी इन एवरी सिचुएशन. ओके, गुड. हाउ टू थिंक मोर? संतोष धारण कर लो. क्या कर लो? संतोष धारण कर लो अपनी सिचुएशन से. ओके, वेरी गुड. संतोष धारण कर लो. संतोष कंटेंट. कंटेंटमेंट. हाँ ठीक है, संतोष बोल रहे हैं ना. ठीक है, समझ गया. ओके, गुड. सो मोस्ट ऑफ यू हैव थिंकिंग इन द राइट डायरेक्शन. सो लेट अस पुट इट दिस वे. अगर मैं एक ऐसी थॉट क्रिएट कर लूं, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है. What I have is sufficient. So I'll be happy and grateful. So feeling happy, giving thanks. हमारा मंत्र भी है ना, रंजना? Yes. So जो प्राप्त है पर्याप्त है. Trust me, अगर ये बाय हार्ट आप कर लो और रोज सुबह उठ के बोलो जो प्राप्त है पर्याप्त है, I am happy, I am grateful, feeling happy, giving thanks, आपकी लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी. एंड यू विल गेट सो मच ऑफ पावर कि जो नहीं है वो मैनिफेस्ट करने के तरीके आप ढूंढ लो. तो जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, और जो नहीं है वो मैनिफेस्ट करने के तरीके आप ढूंढ लोगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन से या कुछ भी करके. बिकॉज यू आर हैप्पी एंड यू आर ग्रेटफुल, सो यू हैव द पावर नाउ. यू हैव द पावर टू मैनिफेस्ट वट एवर यू वांट, वट एवर यू हैव डिजायर्स. अपने डिजायर्स को मैनिफेस्ट करना आ जाएगा आपको, बट उसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन चाहिए. फाउंडेशन क्या है? आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम ग्रेटफुल. तो ये साधक इज ऑलवेज हैप्पी एंड ऑलवेज ग्रेटफुल. Then you are a sadhak. If you are complaining, रोता हुआ साधु या रोता हुआ साधक किसी को पसंद नहीं आता, राइट? भगवान को भी पसंद नहीं आएंगे. तो हैप्पी एंड ए ग्रेटफुल साधक इज द राइट अप्रोच. तो इफ यू आर ए साधक, व्हाट यू हैव टू डू, यू कैन राइट इट डाउन इफ यू वांट. जो प्राप्त है पर्याप्त है, आई एम हैप्पी, आई एम ग्रेटफुल, एंड सी द मैजिक हैपनिंग इन योर लाइफ. Your spiritual journey will take a booster dose. Correct? Okay, good. So now, good. So she has written it down already. Very good. All right, Ranjana, acknowledgement. Yes. So now let us have some sharing. What is opening up? And now we will look at, अभी तक तो थ्योरी हो गया, जो थ्योरी था वो कवर कर लिया. Now the question is, if you are a sadhak, tell me your journey now. आप कहाँ पे हो, कहाँ जाओगे, कैसे जाओगे? Anybody wants to share what is opening up? And then we will see what is the quality, what is actually required for the practicality. अभी जैसे practical एक solution दिया मैंने, वैसे ही practical में देखेंगे कि हमको हमारी लाइफ को कैसे लेके जाना है. Yeah. So that will be the last part, which I will give you. But before that, let's have some sharing. Okay, Gunjan and then Ranjana. Yes, go ahead. Sir, I've always heard from you that what you get, whatever you deserve. तो आई थिंक कि हमें वही मिलता है जो हम डिजर्व करते हैं, और हमारा वही लेवल होता है. हाँ, तो डिजर्विंग लेवल को बढ़ा सकते हो हीलिंग से. साधना से अपने डिजर्विंग लेवल ही बढ़ा रहे हो आप. यस सर. वेरी गुड. So that is the right approach. So whatever you are getting, you say this is what I deserve right now. So जो प्राप्त है पर्याप्त है. I am happy, I am grateful,
and then move on the sadhana, increase your capability. काबिल बनो, काबिलियत अपने आप आएगी. Yes, so by healing you are raising your deserving level, and the desires will manifest. It has to manifest. Any desire you have will manifest 100%. I am making a bold statement. और वो कब होगा? जब आपका डिजर्विंग लेवल उस डिजायर्स के लेवल को मैच करेगा. तो इस जन्म में या अगले जन्म में, डिपेंड्स ऑन योर स्पिरिचुअल इवोल्यूशन. So focus on the spiritual journey, focus on your evolution, and always keep the desires in mind. Keep telling the universe, I want this, I need this, I am manifesting this. जब इक्वेशन सही होगी वो अपने आप आ जाएगा. Very good Gunjan. Yes, let's acknowledge. Yes, Ranjana, you raised your hand. Go ahead. Sir, so the crux of the day is कि जो भी है संतुष्ट रहना है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है. And for the things we want in life is the manifestation. And besides, this being developing the capabilities to manifest that or attain that. Okay. That is also most important, right? Yes, you will get that. Where do you get the strength from? From your sadhana, from your seva, from your satsang. That's how you will get it. आपकी spiritual strength ही आपको ताकत देगी, power देगी कि to manifest. So focus on your journey, focus on your path. So besides, there's a confusion. Besides spiritual journey and healing and all, in this physical life, we जो भी हम चाहते हैं उसको करने के लिए कैपेबिलिटी तो डेवलप करनी पड़ेगी ना. वो तो कर ही रहे हो ना, वो तो नीड्स हायरार्की में हो ही रहा है ना. सर्वाइवल से सिक्योरिटी में आए, सिक्योरिटी से लव एंड बिलोंगिंगनेस में आए, लव एंड बिलोंगिंगनेस से एस्टीम एंड प्रेस्टीज में आए. ये सब अपने पुरुषार्थ से ही करोगे, एक्शन से ही करोगे, स्किल से ही करोगे. स्किल तो आप सीख ही रहे हो. आपने सीए किया तभी तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बने हो. तो स्किल तो आप जोड़ ही रहे हो, राइट? जैसे जैसे नीड्स पूरी होंगी तभी आप ऊपर उठोगे ना कॉन्शियसनेस में, तभी तो नीड्स फुलफिलमेंट पूरी होंगी. तो दैट यू आर ऑटोमेटिकली डूइंग. यही पुरुषार्थ है. हाउ टू यू कैन से learn new skills and practice them to go to the new levels of success. First materialistic world and then spiritual world. अलग अलग नहीं है. नीड्स हायरार्की में देखो, नीचे वाले नीड्स आपके मटेरियलिस्टिक हैं. लोअर चक्रास आर रिलेटेड टू मटेरियलिस्टिक सक्सेस, द हायर चक्रास आर रिलेटेड टू द स्पिरिचुअल सक्सेस. वननेस तो ऊपर ही आएगी ना. 7 चक्रा पे तो आएगी वननेस. करेक्ट? अनुज जी का है? हाँ, अनुज जी हैं. तो 7 चक्रा विल कम एट वननेस विल कम एट द 7 चक्रा. पहले तो लोअर चक्रा से ऊपर तो उठो. मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड आपके नीचे वाले चक्रास में है. स्पिरिचुअल सक्सेस आपके हार्ट चक्रा से ऊपर में है. आपकी कॉन्शियसनेस जैसे जैसे बढ़ेगी आप स्किल सीखोगे और आप सक्सेस अचीव करोगे. क्लियर? वेरी गुड रंजना. लेट्स एक्नॉलेज. यस अपूर्वा जी, यू हैड रेज योर हैंड. Yes, sir. I was just wanted to acknowledge, or I wanted to mention that being happy, giving thanks, and प्राप्त है, पर्याप्त है, उसमें हमें जो प्राप्त है बहुत बार हमारी दृष्टि से ओझल होता है, हमको ध्यान में नहीं आता है. तो थोड़ा एक कोशिश करने पर शायद मिल जाए. तो वो कोशिश के डायरेक्शन में मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया था. आई वांट टू शेयर दैट. जैसे हम ईश्वर का नाम जपते हैं वैसे सोचने लगे कि आई एम थैंकफुल, आई एम थैंकफुल, आई एम थैंकफुल. ऑटोमेटिकली यू विल स्टार्ट सर्चिंग फॉर व्हाट आई एम थैंकफुल फॉर, what I have that I can be thankful for, and therefore I will learn what I already have. And when I did that experiment, it was a real joyful experience. Very good. बहुत बढ़िया sir. And in fact, I had the same experience when I was long time back, 20 years back, I suppose.
I was reading the book on secret. सीक्रेट के बाद उसमें आया था पावर, एंड देन आया था मैजिक. तीन बुक्स आई थी उनकी. तो वन बुक वाज कंप्लीटली डेडिकेटेड टू बीइंग ग्रेटफुल, एंड देन I think I had completed, every day I was supposed to write 1 page of gratitude, and by the time I finished that book, in maybe next 2 months I had finished 3 diaries of gratitude. रोज एक पन्ना भर के मैं सिर्फ ग्रेटिट्यूड ही भरता था उसमें. वो खत्म नहीं हो रहा था. फिर मैं I had finished 1 diary, 2 diaries, 3 diaries, and that is when I stopped writing. मैंने कहा हाँ हो गया, सीक्रेट भी हो गया, मैच पावर भी आ गया, मैजिक भी हो गया. नाउ लेट मी क्रिएट दैट मैजिक काइंड ऑफ अ थिंग. सो इट्स वेरी वेरी पावरफुल. यस, व्हेन यू आर एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड, and you should say why you are just simply saying I am grateful नहीं चलेगा. I'm grateful to this person for this. Be very clear about it, and then you see the magic happening. Gratitude and happiness can create magic. And that's why we have that mantra, feeling happy, giving thanks, right? Praveen sir. Yes. All right, very good. Let's acknowledge everybody. Yes, anybody else who wants to share anything? And then I quickly give you the last wisdom bite. Anybody who wants to share? Anirudh ji, kuch khol ke aa raha hai? Anything opening up? Anything you want to share? No, abhi nahi sir. Abhi nahi. Okay, fine. Great. So in that case, we move on. Anybody else who has a question? No. Devesh, anything you want to ask or you want to share? ज्योति जी, सीमा जी, सुशील जैन जी, कोई कुछ शेयर करना चाहेंगे? Otherwise, I'll give you the last wisdom bite, and then we take the sharings. Yes, Gunjan, go ahead. सर, जैसे आपने कहा कि we have to be very particular about the person to whom we are grateful to. So can we be grateful for everything? Be specific. Mind को specific चाहिए. Mind doesn't understand infinite. I've told you that before, right? Mind को infinite समझ में नहीं आता है. तो I'm grateful कहने से mind कहेगा क्यों grateful हूँ मैं? If you say I'm grateful because you are a source of joy and happiness in my life. Okay, great, wonderful. My mind knows. Okay. I am grateful to you because you have guided me in my difficult times. Okay, mind को मालूम है ये. Correct? Like that. So you are grateful to your parents for they gave you birth. Simple. You're grateful to your son because he is a source of joy for you. So I'm just giving you some example. Correct? Yeah. You don't have to pick it up. But then you be specific. Mind को clear होना चाहिए. You are creating with your mind only ना. Mind तो बहुत बड़ा ऐप है. तो उस ऐप को ढंग से यूज करने के लिए उसके अंदर सही इनपुट देना पड़ेगा, तभी वो सही आउटपुट देगा. बी स्पेसिफिक. माइंड को स्पेसिफिक चाहिए. And mind cannot understand you. And ego is a product of the mind. I've told you that many times, right? तो अगर I'm very grateful today to attend this DHV program. Grace, very good. You're grateful to DHV for that. Very good. Do that. And everybody is grateful to you because of your participation. People are getting a lot of value. So everybody is grateful to everybody. We are all connected, right? Absolutely. Very good. Okay, good. Anybody else who wants to share anything? Right. Now let us look at the life of a sadhak in today's practical world. अब आपको अपनी जर्नी समझ में आ गई. आप कहाँ हैं? क्लियर है. आप कौन से गृहस्थ आश्रम में, कौन से आश्रम में हैं आपको मालूम होगा. गृहस्थ आश्रम में ही है ज्यादातर हम लोग, और या कोई वनप्रस्थ में आ गए होंगे रिटायरमेंट लेके. Otherwise you are in action. So you are in गृहस्थ आश्रम and you have already accumulated. So I'm just giving an example. If you have already gone through Kama and if you have already gone through Artha, you are looking at Dharma now, and then you are preparing for Moksha, liberation. Correct? तो आपको अपने पुरुषार्थ का पिलर मालूम है, आपको अपने गृहस्थ जीवन का आश्रम मालूम है. अब आप अपनी साधना में कौन से मार्ग पे हो ये भी आपको मालूम है. पर साधना कैसी होनी चाहिए? साधना ऐसी होनी चाहिए जो आपकी चित्त को शुद्ध करे. अगर आपका चित्त शुद्ध नहीं हो रहा है, increase the intensity of your sadhana or add some more elements to it. चित्त शुद्ध नहीं हो रहा है, then you are not doing the justice to your sadhana. तो just साधना वैसी होनी चाहिए जो आपके चित्त को शुद्ध करे. राइट? सत्संग ऐसा होना चाहिए जो आपको एलिवेट करे. आप दुखी हैं, सत्संग में आ गए, जैसे दिस इज अ सत्संग, राइट?
तो यहाँ पे आ गए, आपको ऐसी अवेयरनेस मिली कि आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ गई. सो सत्संग हैज टू बूस्ट यू अप. इट कुड बी वन फ्रेंड, इट कुड बी ए ग्रुप, इट कुड बी कीर्तन, भजन, डांस, व्हाटएवर. भजन गा के डांस करो, वो भी है. तो इट इज ऑल सत्संग. क्लियर? सेवा हैज टू बी देयर because you are contributing to another person, because you are seeing divine in them. आप डिवाइन हो, वो डिवाइन है, तो वो एक्सपीरियंस तभी होगा जब आप उनकी सेवा करेंगे. तो साधना, सेवा, सत्संग इज ए मस्ट फॉर ए साधक. वट एवर यू डू, कोई भी पाथ पे हो, contributing to the other person, cleansing your chit, these are the very very important aspects of sadhana. So in your lifestyle, what you have to see is, now I'm making a very bold statement, whatever you are doing in your life, आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी कर रहे हैं, बिजनेस में हैं, जॉब में हैं, रिटायर्ड हैं, जो मर्जी है, आपके एक लाइफस्टाइल जो है, आपके कर्म जो हैं, आप जो सोच रहे हैं, जो बोल रहे हैं, जो कर रहे हैं, आपके इच्छाएं क्या हैं, आपके खाने का स्टाइल क्या है, आपका जीवन रहने का स्टाइल क्या है, एवरीथिंग कैन बी कैटेगराइज्ड इन दिस होल यूनिवर्स, or in this planet Earth at least. Everything can be categorized into three qualities. One is tamas, tamasic, one is rajas, rajasic, and the third is sattva or sattvic. आपकी लाइफस्टाइल, आपके खाने का स्टाइल, आपके कर्म, आपकी इच्छाएं, आपके डिजायर्स, जो कुछ भी आप सोच सकते हैं, सब इन तीन कैटेगरीज में आ रहे हैं. अब मैं बहुत ज़्यादा इस पर डिस्कस नहीं करूंगा, बिकॉज हमने ऑलरेडी पहले डिस्कस किया हुआ है. अब आपको सिर्फ ये बताऊंगा, जो तामसिक है वो निषिद्ध कर्म है, यानी कि वो प्रोहिबिटेड है. तो जो जो चीज़ें आपने अपने लिए प्रोहिबिटेड की, औरों की बात नहीं कर रहा, जो आपने अपने लिए प्रोहिबिटेड माना हुआ है, वो तामसिक है. स्ट्रेट से नो, स्ट्रेट वे यू हैव टू से नो टू देम, दैट यू विल सेफगार्ड. पतन नहीं होगा. तामसिक से क्या होता है, आपके स्पिरिचुअल जर्नी में पतन होगा. राजसिक क्या होगा, राजसिक में आप बॉन्डेज में फंस जाओगे. यू विल बी स्टक इन बॉन्डेज. देयर इज नथिंग राइट और रॉन्ग अबाउट दिस, नथिंग गुड और बैड अबाउट दिस. रिजल्ट्स हैं, कॉन्सिक्वेंसेस हैं. तामसिक काम करोगे या तामसिक कुछ भी करोगे, आपके स्पिरिचुअल जर्नी में पतन होगा. राजसिक कुछ भी करोगे, आपके बॉन्डेज बढ़ जाएंगी, आपके कार्मिक बॉन्डेजेस बढ़ जाएंगी. बॉन्डेजेस से फ्री होना है, अगर लिबरेशन चाहिए, तो आपको सात्विक जीवन ही जीना है, सात्विक भोजन करना है, सात्विक लाइफस्टाइल जीना है, सात्विक कर्म करना है. राइट? देन यू विल बी uplifted or you will be moving upward in your spiritual journey. Upward means higher consciousness में जाएंगे. तो अब आपको देखना है आपकी लाइफस्टाइल में आप कहाँ पे हैं और कहाँ जा रहे हैं. Again, I am not saying you should do this. There is no should in your spiritual journey. Whatever you do, there will be a consequence. काम से कर रहे हो, गिरोगे, क्योंकि स्पिरिचुअल जर्नी वैसे ही स्पाइडर की जर्नी है. जितनी मुश्किल से ऊपर चढ़ते हो, एक फिसलोगे और थार से नीचे गिरोगे. राइट? तो तामसिक विल ऑलवेज मेक यू फॉल. राजसिक विल नॉट मेक यू फॉल, बट इट विल क्रिएट ए वेब अराउंड यू. बॉन्डेज में फंस जाओगे बुरी तरह. किसी से गुस्सा करके देखो, यू आर लिंक्ड विद देम. एंगर, हेट्रेड, ऑल दिस विल लिंक योर पर्सन, योर ऑरा विद देम, एंड यू विल बी एंटैंगल्ड. दूसरों के ऑरा के एनर्जी के साथ एंटैंगल हो जाओगे. किसी को माफ नहीं कर सकते, किसी से गुस्सा आ रहा है, किसी के साथ हेट्रेड है, किसी के साथ एनवी है. आपने कर्म कुछ नहीं किया, लेकिन आप एंटैंगल हो गए. फ्रीडम चाहिए, बॉन्डेज से फ्रीडम चाहिए, आपको सात्विक कर्म में आना ही पड़ेगा. आपकी इच्छाएं सात्विक, आपके वचन सात्विक, आपके कर्म सात्विक, आपका खाना सात्विक. Yes, and that will take you to the heights of spiritual journey. Your consciousness will rise higher and you will move towards liberation or moksha. Or even if liberation or moksha is not the attainment of your goal, it will take you to the highest level of your potential. आप अपने highest potential पे life में operate करेंगे, self actualization के level पे, and there you will be leading people and you will be an example
for others. Others will follow you whether you like it or not, whether you want it or not, they will follow you. Because you're operating at the highest level of potential. So that is the Gyan, and it is exactly 10 o'clock. So I'll stop the Gyan now. We'll take some sharings and then we close the session. So anybody who wants to share what is opening up? अब अपनी लाइफ से बताएंगे, आप अपनी लाइफ में कहाँ देख रहे हैं अपने आप को, क्या सीखा आज और कैसे आगे बढ़ेंगे? कौन बोलना चाहेंगे? रंजना, ज्योति जी, सुशील जैन जी, सीमा जी। सर यस अनिरु जी। हाँ, मैं ये जो मैंने इसको अभी समझा है, साधक का जीवन, साधक का मतलब ये हो गया कि स्टूडेंट्स, वी हैव टू लिव लाइक स्टूडेंट ऑलवेज। स्टूडेंट का मतलब हो गया कि सीकर, वी आर ऑलवेज ए लर्नर एंड एक्ट। तो हमेशा ये तो लाइफ में हमेशा बना रहेगा, कोई टाइम ऐसा नहीं आएगा कि वो लर्निंग का प्रोसेस खत्म हो जाएगा। और इसमें जो है मैंने ये देखा है कि जो अपना जो एक्सपीरियंस के बेस पर कि 4 में मैंने लर्न करना है। एक तो हेल्थ इज इम्पोर्टेंट, उसमें सारा ये वेजिटेरियन खाना पीना ये सब आ जाएगा कि जो आपको अपना खाना जो है अपनी जो हेल्थ के बारे में प्रॉपर रखना है। और दूसरा जो आपने बताया था अर्थ आ गया, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, वो बहुत जरूरी है। जितनी जल्दी हम ले आए उतना वी विल बी अपने आप को हम अच्छा फील करेंगे। फाइनेंशियल सिक्योरिटी की जगह पे फाइनेंशियल फ्रीडम क्यों नहीं बोलते? एक ही फ्रीडम कह देते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम कह देते हैं। सिक्योरिटी, अगर जस्ट आपके लिए बता रहा हूँ, सिक्योरिटी बोलेंगे तो S2 लेवल है, फ्रीडम बोलेंगे तो S5 लेवल है। नहीं, मेरे लिए सब लेवल बराबर है सर। नहीं, जस्ट बता रहा हूँ मैं, सिक्योरिटी कम्स एट ए लोअर चक्र। मैं समझ गया सर, मैं S2 S5 में फर्क नहीं समझता। S2 S5 छोड़ दीजिए, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ सिक्योरिटी कम्स एट ए लोअर चक्र, फ्रीडम कम्स एट ए हायर चक्र। कोई बात नहीं सर, वो ठीक है, ठीक है। हाँ, वर्ड्स जरूरी है ना सर, जो बोलेंगे वही मैनिफेस्ट होगा, इसलिए। हाँ जी बोलिए। हाँ जी, तो फाइनेंशियल फ्रीडम ठीक है, वो भी ठीक है। और तीसरा जो है नॉलेज, ये क्या हो गया? ठीक है, हेलो, हाँ जी, हाँ जी। तीसरा है जो फील्ड है नॉलेज है, जो काम आप कर रहे हो, हर आदमी कोई ना कोई अपने लाइफ में काम कर रहा है, नौकरी कर रहा है, रिटायरमेंट के बाद भी कुछ ना कुछ आदमी सीखता है। तो उस नॉलेज को अपने को लर्न करते रहना है, उस पर एक्ट करते रहना है, एंड वो आपको खुद डिसाइड करना है कि क्या नॉलेज क्या करनी है। और चौथा जो है वो है स्पिरिचुअल, कि स्पिरिचुअल जर्नी देखनी है, अपने अंदर स्पिरिचुअल्स को ढूंढना है और औरों में डिवाइन को अपने में देखना है, दूसरों में देखना है। तो ये 4 जो हैं, तो इस बेस पर जो है कि एक जो साधक है, एक स्टूडेंट्स है, वो मेरे ख्याल इन 4 को फॉलो करके आगे बढ़ सकता है। ठीक है, बढ़िया, फर्स्ट क्लास, लेट्स एक्नॉलेज, वेरी गुड। Okay, anybody else who wants to share anything? Ranjana, anything you want to share? What are you taking away from the session? Seema ji, Seemani, Jyoti, what are you taking away from the session? Namaskar ji. हाँ जी. Yeah, namaskar. Thank you for the opportunity. I had been traveling with you for last 1 year. I have no knowledge in Hindi. I understand only in English what you are telling. But actually, this is a very gift lesson I met so far. Very gifted, because without any expectation, you are giving your top level presentation. It is not only for presentation, really it acts with our mind. We observe exactly your things, and we are following and we are enjoying. Really, it is a very good experience in my life, because I had been working in teacher for last 30-35 years. After retirement, I am expecting like a guru like you, but unfortunately I am not able to understand the Hindi, and also I have very little knowledge in English. But every day I happen to remember you for your lot of ways, like mantra. I feel that your words are mantra. Actually, myself and my daughter
and my daughter, my son, everyone likes our philosophy. Really, it is very gift. I am in south, more than 2,000 kilometers away. But how I was attracted by you, I don't know. Really, it is very gift. My humble request is, at least one time, you please come to Tamil Nadu and my home, because many people to me, Arvind Tiwariji and his team, and also Daryl D'Souza and Ite Chandal. A lot of Delhi persons happen to visit my home, and I arrange some meetings also for public, because I would like to give the things to the publics also. They like very much. So thank you, Mani. Thank you for your kind words. It's really very great for you to say all this. Plan one time to visit Tamil Nadu. Sure, At least, सर आपको तमिल आती है तो आप तमिल में कुछ बता दो ना उनको. madam? नहीं, ऐसा कुछ नहीं आता. So thank you, Mani ji. So thank you for your kind words, and definitely if the occasion comes and if it is an opportunity, I'll definitely try to be there. Earlier I used to travel a lot, but nowadays I'm stuck in my home. That's where I operate from. So nowadays I don't travel much, right? But definitely if I plan to come there, I'll definitely make sure that I meet you. Thank you so much. Let's acknowledge Mani ji. That was very heartfelt sharing. Yes, great. Yes, Seema ji, anything you want to share? What are you taking away from the session? क्या लेके जा रहे हैं? सर एक तो जो आपका आज पूरा ये सुना बहुत ही बड़ा एक अपने अंदर एक थोड़ा सा सेटलमेंट फील कर रही हूँ मैं, जैसे भी मैंने सर ने बोला, एक थोड़ा सेटलमेंट और पीस अपने अंदर में फील कर रही हूँ. और दूसरी चीज तामसिक भोजन और राजसिक, इसमें आज मुझे थोड़ा सा डिफरेंस पता चला. हालांकि मैं तामसिक को बुरा नहीं मानती थी, बट आज मुझे पता लगे कि उसके वो क्या है कि तामसिक आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को हार्म करता है. तो जिसको स्पिरिचुअल जर्नी पे आगे बढ़ना है तो उसको तामसिक छोड़ना पड़ेगा ताकि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी बेटर हो सके. ये चीज आज है. और एक जो लव वर्ड है, लव आपका आपके गॉड के लिए, नॉट ह्यूमन, वो अलग. उसमें एक डिफरेंस मुझे आपका लगा है कि लव जैसे मीरा ने किया था वो वाला लव है, वो वाला प्रेम है. दूसरा वाला प्रेम हमारा ये अलग, एक थोड़ा सा ये डिफरेंस मुझे. Very good, Seema ji. Let's acknowledge Seema ji. And only one word, when I said love God, you have to understand God is there in all the human beings, so you can love them, not a problem. Only thing is, just like we love God and we are not attached to them, लोगों के साथ प्यार करने से attach हो जाएंगे. So the only way to get free from the attachment is fall in love with divine. You will be free from others. When you connect with divine, you are free from the attachment from people. You can still love them, but you will not get attached. So first fall in love with divine, then fall in love with people, not the other way around. Okay, let's acknowledge. Very good. Anybody else wants to share anything? Jyoti ji, Sushil Jain ji, kuch bolna chahenge? Otherwise we will close. It's already 9 minutes over time. Yes, Apurva ji, go ahead. Sir, the take that or the understanding that I got when you were discussing about Tamasic and Rajasic and Sattvic is that when you are doing Tamasic action, you are actually driven and you are not in control. When you are doing Rajasic action, you are aware, but you are not in control. But when you are doing Sattvic, you are aware and you are in control. Okay, very good. So you can understand it that way. When you are talking about these things. Very good. Good understanding. So if that guides you, that should be the benchmark. Very good. Bahut badhiya. Let's acknowledge Apurva ji. And now let us acknowledge everybody who participated. Thanks a lot for your participation. And I hope this session was valuable to all of you. And we will have more sessions coming up, more topics coming up in the next coming weeks. So let's meet next Wednesday again with a new topic. Until then, Aham Brahmasmi. Enjoy a great life. Enjoy a great week. Aham Brahmasmi. Bye-bye. Good night. Thank you. Thank you, sir. Good night.